Now, 72 hours on, the mystery surrounding Swati Maliwal continues and the AAP Rajya Sabha MP remains incommunicado. Despite multiple visits to her residence by the Delhi cops, Maliwal is yet to be traced. Now, the Swati Maliwal assault case has taken several twists, with Delhi cops attempting to contact her after she was allegedly assaulted by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's personal assistant. Now, even as the case unfolds, AAP has not yet acted on the matter, which has criticized AAP's silence on the same, questioning Kejriwal's inaction and alleging his involvement. Now, amid all this, Delhi CM Arvind Kejriwal is all set to hold a mega roadshow today to kickstart the party's election campaign in Punjab. Important to note that Swati Maliwal, who was earlier part of the party's star campaigners, has been dropped from the list. 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर। अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है। पिछले 48 घंटे से महिलाएं अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई। ये अलग बात है कि वो मौजूदा तौर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं। अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है। क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। Nikhil, my colleague, joins me over the phone lines. Nikhil, good morning. Clearly, as far as we speak about Swati Maliwal, she hasn't come out to really, either make a statement, even with the fact that we understand Delhi cops have tried to establish communication. But as we speak about this, even AAP's silence on the matter in terms of taking action has been questioned. Well, what is even more shocking, Nivedna, is that yesterday when Arvind Kejriwal reached out at the Lucknow airport, because in a short while from now there is a joint press conference by Arvind Kejriwal and Akhilesh Yadav as well. And this is going to be India Alliance press conference, second press conference in Lucknow. And yesterday when Arvind Kejriwal reached out at Lucknow airport, Bibhav was very much there, and this is something which has been captured in a photograph as well. And there was also a presence of Member of Parliament from Aam Aadmi Party, Sanjay Singh, who said that Arvind Kejriwal is taking this matter very seriously, and some of the strict action is expected from Arvind Kejriwal against Bibhav Kumar. But the reality is almost very different. So this is something which is currently being enjoyed, the priority, so to say, or the privilege, so to say, which is currently being given to Bibhav Kumar, because he is, yet again to be seen in up and close with Chief Minister Arvind Kejriwal and all the senior leaders of the Aam Aadmi Party, which some way or the other reflects very clearly that there is no mood as far as the action is concerned against Bibhav Kumar, particularly from the side of the Delhi CM Arvind Kejriwal. And this is something which also indicates that whatever allegations which were made by Swati Maliwal in the very first place, that on the behest of Arvind Kejriwal, Bibhav Kumar mistreated her, assaulted her, this appears to be true, but everything is subjected to investigation. Yesterday also, Member of Parliament Sanjay Singh reached out in person with DCW members at Swati Maliwal's residence, but the meeting lasted for a few minutes, but it appears like that despite taking any of the action, maneuvering is something which is currently being done from the side of the Aam Aadmi Party to Swati Maliwal. Back to you, Savita. Right, Nikhil. Thank you very much for getting us those details and where things stand at the moment. We leave it to that, but let's also listen into this reaction quickly by Alka Lamba. साथियों, बहुत से लोग
मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं स्वाति मालीवाल के मामले में खामोश क्यों हूँ। बिल्कुल, खबर बेहद ही चौंकाने वाली थी, हैरान करने वाली थी, लेकिन खबर की सच्चाई क्या है, जो खबर आ रही थी वो कितनी सच है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, सिर्फ इसीलिए कुछ भी बयान देने से पहले मैं उस सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रही थी और वो सच सामने आया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकारा। अब मैं यही मांग करूंगी बिल्कुल कि इस पे स्वाति मालीवाल को आगे आकर एफआईआर करवानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए कानून का और कानूनी कार्रवाई हो